Hey guys, welcome once again here in my channel Ganesh Art and Design Studio. In this video I'm going to draw and shade this pose of the hand, right? So just stay with me and I'm going to analyzing the whole shape, forms, proportions and the tonal values also. So you will get the three-dimensional information and you will get the actual planning how to start to finish this kind of drawing, right? So just stay with this whole video, enjoy every stage, do not skip any part of this video because it's the most important that every single part of this video. If you skip any part of this video, then you will definitely not get actual idea how to start and what is the middle part of this kind of drawing and how to the light and shade and how to get the actual volume, the tonal values and 3D feeling in this kind of drawing. Okay, now I'm just starting to seeing the basic and simple forms of this pose of hand and trying to establish that form, that information with the right proportion. So it's the most important, try to see the basic shape, and also most important part is try to catch right angle of lines. So mostly स्टूडेंट यहीं पर गलतियां करते हैं, बिगिनर्स भी यहीं पर गलती करते हैं कि जो एंगल और डिग्री ऑफ द लाइन है उसको किस एंगल पे कितना स्लांट करना है, कितना स्ट्रेट करना है, उसको कैच करने में गलतियां करते हैं और उनका ड्राइंग जो है वो रियल डेप्थ और रियल प्रोपोर्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाते. अपने सब्जेक्ट को पूरा टाइम देना होता है. डू नॉट डू द फास्टर. द बिगिनर्स एंड स्टूडेंट यहीं पर गलतियां करते हैं. मैंने भी इस वर्क को करते वक्त 35 से 40 मिनट्स को स्पेंड किया है और अपने सब्जेक्ट को, अपने पैशन को, इस ड्राइंग को पूरा टाइम दिया है, तभी हमें सही रिजल्ट मिलता है. नाउ स्टार्ट टू ऐड मोर कर्व्स ऑफ द लाइन्स because I already established the basic shape and forms. And also it's a time to add some more details so the drawing will look like more finished. तो इस स्टेज पे हम और डिटेल और कर्व्स और मोस्टली द लाइन को फिनिश करने की कोशिश करेंगे. Do the continue work, do the continue your drawing and move forward for finishing. See, right now I'm just establishing some more details. So now here is the tension of the finger, that small finger, the hair. There is a creases of the finger and I'm trying to add. And now it's time to finalizing our drawing. So at this stage we are really careful about the all angle of lines, the movement of lines. That is the most important part at the finalizing the drawing. So it's look like a more finished drawing, more detailed drawing. See here, यहाँ पर इस स्टेज पे मैं और भी कुछ छोटी यानी कि टाइनी डिटेल्स ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ. And now start
the shading part of this subject. The most important part to how to render your pencil on a surface of the paper. It should to be real smooth, and I'm not going to press hard and try to catch real dark values at the first time. So I just repeating my pencil rendering on the surface for creating the darker values. और अपनी टोनल वैल्यूज को धीरे धीरे डेवलप करना है, उसको एक ही बार में डार्कर नहीं करना है। और देखिए, आई एम जस्ट चेंज द माय रेंडरिंग एंगल्स ऑफ द पेंसिल। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका शेडिंग एकदम स्मूथ लगता है। तो एक ही एंगल से ना करते हुए मैं उसके रेंडरिंग के एंगल को चेंज भी करता जा रहा हूँ। और नाउ हियर आई एम doing that small crease at the hand and try to establish the core shadow and the reflected light too. Yes, this is the core shadow. There is a top planing having a just some lighter values, so I am trying to establishing that values and it's get more volume. And see, now I am again repeating the same area for doing a little bit darker. Adding right now, so यहाँ पर भी इस एरिया में भी टेंशन दिख रहा है, the line of the tension, and there is some creases of the hand, and try to establishing this kind of detail. Yes, this is the wash. Again repeat this shadow part of the hand, doing for more darker. Yes, establishing the darker values, core shadows and reflected light at this part of the finger. Yes, there is a crease of the hand. And yes, this is the center part. यस, सो ऐसे ही हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है और उसको डेवलप करते जाना है विथ द शेडिंग। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज द रेंडरिंग। सी, सो हाउ आई एम रेंडरिंग माई पेंसिल, इट्स using different angles but very smooth lines. Yes, there is a detail, the side part of the hand, and it gives the more volume. There is a middle tone. Right now I'm establishing. Yes, and that is the main part. There is a volume, so we should to create the core shadow and the reflected light. So we will get the 3D volume, the volume of the shapes. That is the most important part of the shading. Yes, the volume of shapes. And again there is a middle value. And this hand, yes, there is a. So ऐसे ही कुछ डिटेल्स को भी देखते जाना है, टोनल वैल्यूज को भी देखना है और धीरे धीरे अपनी डार्कर वैल्यूज को क्रिएट करते जाना है। Yes, now the adding the more darker values, the darker tones right now, the separating the fingers, there is a real darker value. Yes, there is a core shadow. Again, there is the rounded area of the finger. There is a middle values and lighter values. Right now I'm establishing. Yes, there is a more detail, and again I am repeating this part for a little bit darker.
There is a tension on the thumb. It's a heavy. Yes. तो ये तरीका है इस प्रकार के ड्राइंग को या तो किसी भी सब्जेक्ट को लाइट एंड शेड में डेवलप करना। तो हर स्टेज का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस, एक अलग महत्व होता है जिसको देना पड़ता है। अगर आप उसको सही, हर स्टेज को सही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो तो आप सही वॉल्यूम या तो जो हम मास्टरी कहते हैं, जो 3D फीलिंग्स कहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। सो यस, देयर इज अ मोर डिटेल, देयर इज अ पावर, देयर इज अ स्ट्रेंथ. So I'm right now creating more detail right now here. मतलब बहुत मज़ा आता है। हम हर पार्ट को, हर मूवमेंट को जब एंजॉय करते हैं तभी एक अच्छा वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, अगर आपको बहुत जल्दी है उसको ख़त्म करने की, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। किसी भी अच्छी चीज़ को सही टाइम देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी मैं हर स्टेज को एंजॉय कर रहा हूँ, ये मेरे लिए मेडिटेशन है। किसी भी आर्टिस्ट को एक अच्छा पेंटिंग प्रोड्यूस करने से पहले एक लंबी प्रोसेस से गुजरना होता है, और वो होता है उसकी स्केच बुक। जो भी आप मेरी स्केच बुक एंजॉय कर रहे हो, ये स्टडीज़, दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी विजुअल आर्टिस्ट के लिए। तो हर सही इंफॉर्मेशन को कैच करना और फिर उस सब्जेक्ट को पूरा टाइम देना एंड अच्छे से अपने ड्राइंग को स्टार्टिंग से एंड तक डेवलप करना। यस, आई एम रियली एंजॉइंग every moment, every stage of this drawing. Just adding the more detail, the more movement, the tiny details, and just adding the middle values right now at the top plan of the fingers. Yes. तो ये है सही तरीका। और जब हम पैशन की बात करते हैं तो पैशन बहुत बड़ा वर्ड है। पैशन का मतलब पेशेंस भी होता है, उसके साथ जुड़ा होता है। तो पेशेंसली अपने सब्जेक्ट, अपने टैलेंट को एंजॉय करना है और सही टाइम स्पेंड करना होता है। अगर जल्दी और हड़बड़ी में आप कुछ करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपकी स्किल डेवलप नहीं होगी, चाहे वो ड्राइंग की हो, चाहे वो स्केचिंग की हो, चाहे वो शेडिंग की हो। हर स्टेज पे हमें हमारी स्किल को थ्रू टू प्रैक्टिस डेवलप करना होता है, और प्रैक्टिस के साथ पेशेंस भी चाहिए। यानी कि हर वो वर्क जो आप कर रहे हो उसको जितना टाइम चाहिए उतना पूरा टाइम देना होता है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं
वो नॉर्मली बहुत जल्दी में होते हैं और उनमें एक्चुअली पेशेंस की कमी होती है। उन्हें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होता है, जल्दी जल्दी काम करना होता है, लेकिन ये तरीका गलत है। हर स्टेज पे पूरा टाइम देना होता है, तभी हम हमारी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे इस ड्राइंग को फॉलो कर रहे हो या तो फॉलो करने वाले हो, तो पूरा टाइम स्पेंड कीजिए। जैसे मैंने 35 to 40 मिनट्स स्पेंड किया है इसको क्रिएट करने में, जो आपको भी देना हो, तभी आप अपने ड्राइंग में 3D फीलिंग्स ला सकोगे। सही वॉल्यूम्स, सही टोनल वैल्यूज, सही एंगल ऑफ लाइंस, हर चीज़, प्रोपोर्शन भी। Yes, so enjoyable. Yes, and this is meditation for me. I'm really enjoying at every stage, every moment of my drawing. And I hope you all are enjoying this process, how to start this kind of drawing and what is the middle stage and how to do shading and creating 3D effect or real volume. Yes, if you think you get something special information about the drawing and shading, so please like this video and push the bell button, then you will get the first notification from my channel. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपने कुछ यहाँ से पाया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यस, एंड आई होप इसके बाद जब भी आप काम करने बैठोगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपकी प्रैक्टिस होगी, वो सही तरीके से होगी। आप अपने सब्जेक्ट को और अपने टैलेंट को सही टाइम प्रोवाइड करेंगे और अपनी स्किल को डेवलप करेंगे। And also thank you so much for watching this video. And stay healthy, stay with your passion, do more practice and practice and practice. Then see you at the next video. Bye bye.